everyone, this is me Krishna and today I will teach you the sample and technique of sampling. तो स्टार्ट करते कि जो सैम्पल होता है उसको हम नमूना बोलते हैं और ये रिसर्च में काफ़ी यूज़ होता है और इसके बगैर रिसर्च इज़ नॉट पॉसिबल. सो सैम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड सैम्पल. To obtain the representative sample, the researcher select each unit in the specified way under the control condition. Usually 4 steps are involved in process: definition of population, listing the population, selecting the representative sample, obtaining the adequate sample. अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सैम्पल. द सैम्पल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन. द सैम्पल साइज मस्ट बी सिलेक्टेड डिपेंडेड अपॉन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव. सैम्पल शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट it can be modified depend upon the prevail customs. Sample should reflect all the members of the population of data. Sample should be large enough to give sufficient precision. Sample should be unbiased by the sample procedure or equipment. Sample should be chosen in the systematic random way so that the chance of or the operation probability utilize. अब देखते हैं कि जो टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग है उसमें क्या है. तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यानी कि उसमें हम प्रोबेबिलिटी यानी कि हाई चांसेस क्या है और जो फ्यूचर है उसको हम प्रिडिक्ट करेंगे. इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर सिलेक्टेड एट द discrimination of the researcher but by the means of certain procedures which ensure that every unit of population has one fixed probability is being included the sample. This method is also called random sampling. Characteristic of probability sampling. According to good probability sampling have the following characteristic. Each unit in the sample has some known probability entering the sample. Weights appropriate to the probability are used in the analysis of the sample. The process of sampling is automatic in one or more steps of selection of unit the sample. Advantage of probability sampling. It helps to researcher to know the size of sample needed to achieve any desired level of accuracy. The researcher also may be able to specify the chance of each unit being selected. Disadvantage of probability sampling. It depends upon how good a sampling frame is made, although this remain a limitation in complete enumeration studied. And in small areas or rare subpopulation, sampling error may be high. Types of probability sampling. तो उसमें टाइप्स क्या रहेगा. पहले सिंपल और अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, लॉटरी मेथड, यूज़ ऑफ रैंडम टेबल एंड क्लस्टर सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. तो ये सारे टाइप्स है वो रहेंगे. फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. तो इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग द यूनिट्स आर सिलेक्टेड द discrimination of research. Such sample are human judgment in selecting unit and have no theoretical basis for estimating population characteristic. Types of non probability sampling. Quota or chunk sample, incidental volunteer convenient sampling, snowball sampling. Advantage of non probability sampling. They are quicker, cost effective and more convenient than probability sampling. Non-probability sample do not require a sampling frame. The size of sample size and quota requirement are usually achieved. Or disadvantage of non-probability sampling. Less confidence is placed in data obtained from samples and thus result obtained cannot be generalized for the entire population. Sampling based on convenience affect the various within the groups as well as between groups. Sampling errors of this sample cannot be determined.
तो आज के वीडियो में हमने देखा कि जो सैंपल है वो क्या है, फिर टेक्निक ऑफ सैंपल देखा जिसमें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आएगा, उसके भी टाइप्स आएंगे। फिर हमने देखा कि जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है वो क्या है, और दोनों के हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखे। और अगले वीडियो में हम रिसर्च प्रपोजल है उसके स्टेप्स क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग एवरीवन।